फ्रेंड्स ये देख सकते हैं हमारा जो है छोटा सा होममेड जनरेटर, और ये रही हाई वाट का जो लैंप होता है वो। चलिए इस जनरेटर को जो इस बोर्ड के साथ कनेक्ट है, अभी इस लैंप को हमने कनेक्ट कर दिया है। चलिए अभी इस जनरेटर के रोटर को घुमा के देखते हैं शाफ्ट को। देखिए इस जनरेटर के शाफ्ट को इतना मतलब क्या हल्का सा घुमाने से ही कि ये बल्ब कितना ज़्यादा ब्राइटली जल रहा है। ये बहुत ही पावरफुल जनरेटर है, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो पहले तो फ्रेंड्स आपको इस तरीके का कार्डबोर्ड चाहिए, ठीक है, जो कि कार्डबोर्ड पेपर बोर्ड चाहिए, जिसको मैं वीडियो पे जिस तरीके से जोड़ रहा हूँ, जिस तरीके से कटा हुआ है, इस तरीके से आपको काट लेना है। उसके बाद जो है ग्लू गन के मदद से या और कोई गम के मदद से इसको जोड़ देना है, बिल्कुल वीडियो में जिस तरीके से जोड़ रहा हूँ। इसीलिए कहता हूँ कि वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा तरीके से देखना, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो एक स्टेप मिस होगा तो आपका जनरेटर शायद ही ठीक से काम ना करे। तो अच्छे तरीके से वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए, जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करते हैं। आज इतना ढेर सारा लाइक कीजिए कि यूट्यूब भी चौंक जाए। तो बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए, मुझे प्यार दीजिए, और चैनल में नया हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना।